Morning, students. We are starting with a new unit today, and that is general organic chemistry. So we have seen how organic molecules are known in IUPAC nomenclature. And now we are going to more understand about their reactions. But to make you understand how organic compounds are going to react, we have to know certain basic things. So there will be 3 units that we will be discussing actually before we start with functional group. The first unit is general organic chemistry. After that, there is isomerism. And after that, we will be discussing reaction mechanism. And after these three basic fundamental units, we will be in position to actually understand and predict the product in any organic reaction. So the whole aim of general organic chemistry is, okay, to help us understand the product that is formed in any reaction. So let us understand a basic organic reaction. Okay, what is the meaning of mechanism? What is a basic organic reaction? Let us understand this. So if I have to represent any organic reaction, it always starts with a particular functional group and to which we call it as substrate. And then to that, we are adding some reagent. Then there are some appropriate conditions given. And what we get is product, maybe one or more, and one plus. So this is how you can represent a typical organic reaction. Okay, your substrate is an organic compound or particular organic functional group, which you want to change it into some another functional group. Reagents can be organic, reagents can be inorganic. There are appropriate conditions needed to carry out any reaction. Temperature, pressure, catalyst. Okay, these are the appropriate experimental conditions that we provide. And then, okay, what we get by making a change in the functional group is our product, and anything other than product that is formed is our byproduct. So this is a simplest way to represent any organic reaction. So to go ahead with, I just take a basic example. I'm doing a substitution reaction of, okay, methane is made to react with the reagent fluorine, and condition that we require is sunlight, and to be specific, diffuse sunlight. And what we get is methyl fluoride and HCl. And this reaction goes on. It doesn't stop here. It will go on substituting all the hydrogens that we see, okay, in methyl fluoride. So here substrate is methane, reagent is fluorine, obviously product is methyl fluoride, and byproduct is HCl. Now, to understand mechanism. So what is mechanism of this reaction? Okay, mechanism of this reaction is a stepwise description. How from starting with the reagent, we got the product. Every small details of what reactant is undergoing till it becomes product is called reaction mechanism. So what is included in that detail? If I look at this reaction, when this reaction is possible, when my reactant molecules will undergo bond fission. So what happens in any reaction is bond fission. If the bonds in the reactant are not breaking, okay, there is no product formation. So there is a bond fission happening in reactant molecule. And to make this bond fission, we also have to provide with appropriate conditions. Okay, conditions required to break the bond. And we have to understand how the bond is breaking. What is the role of reagent? How the bond in the reagent is breaking. And then we will get after bond fission reactant molecules, when they undergo bond fission, what we get are called reaction intermediates.
So reaction intermediates are in between short-lived species, okay, which will be there in a reaction for some time, and then they will quickly get converted into product. So what is happening when this is formed? Bond formation. So a product formation is bond formation, and a stepwise description of how from reactant we reach till product is called reaction mechanism. Now, to understand reaction mechanism, I will need in detailed discussion of how the bond is breaking. I will have to understand more about reaction intermediates, and I will have to understand what are the effects that leads to breaking of bond. And all this prerequisite is what we are going to learn now in general organic chemistry. So general organic chemistry is a background that we have to understand, that we must know, to in future learn mechanism of any reaction. Okay, we have to understand GOC to understand GOC to understand in future mechanism of the reaction. अभी GOC में क्या क्या सीखेंगे? So obviously I will have to teach you fission of a bond. But before that, what happens before fission of a bond? What is the first thing that we are going to understand in GOC? The first thing that I am going to teach you in GOC is electronic displacement of covalent bond. How covalent bond, okay, where two electrons are shared, how they are getting displaced. So there are four ways to displace an electron in covalent bond. And this is where we start our topic. Four ways to displace electron. Electron can be displaced by inductive effect or by electromagnetic effect or by mesomagnetic effect or by hyperconjugation. So there are four ways that an electron in a covalent bond can get displaced. And this is what we will have to understand in detail. Then only we can understand the next step. And what is the next step after electronic displacement of a covalent bond? This electronic displacement will lead to bond fission. We will understand bond fission, how the bonds are breaking. And there are two ways to break a bond. So I will discuss this, okay, after I discuss with you electronic displacement. And yes, in this topic, we will also learn little bit about attacking reagents, बॉन्ड फिजन से जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स मिलते हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे, and acidity and basicity of some compounds. So this is what is your chapter GOC is all about. Okay, so let us start understanding GOC, starting with electronic displacement of a covalent bond. And in that, first thing that I'll start is inductive effect. तो अगर आपको बोर्ड से कुछ लिखना है तो लिख लो फटाफट. And I start with inductive effect. So we'll start here. हम electronic displacement से start कर रहे हैं. And first way to understand electronic displacement is inductive effect.
I start explaining you inductive effect. So let us understand what is the meaning of induction. Some kind of a push. So electrons are pushed in some direction due to some particular groups attached. This what is the basic that you're going to learn in inductive effect. So first thing is to understand inductive effect. Inductive effect समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना है कि inductive effect में we understand electronic displacement of sigma bond. तो जो sigma bond होता है, okay, उसमें how the electrons are getting displaced is what we will be understanding in inductive. Okay, so single covalent bond के electronic displacement को हम समझने वाले हैं. तो जो भी कंपाउंड है, अगर उसमें सिंगल बॉन्ड है तो हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सोच सकते हैं. और क्या चाहिए टू अंडरस्टैंड इंडक्टिव इफेक्ट? कभी एक्सपीरियंस होता है इंडक्टिव इफेक्ट when in a compound we see a particular atom or a group, okay, which has difference in electronegativity. तो मैं एक ऐसा कंपाउंड बोर्ड पे ले लूंगी. I am taking this compound CH3. I just change the marker. CH3, CH2, CH2. ओके, तो ये सारे CC बॉन्ड जो दिख रहे हैं, ओके, वो हमको लगता है कि पोलर है कि नॉन पोलर है. CC बॉन्ड को अगर आपको पोलर नॉन पोलर बॉन्ड का थोड़ा रिवीजन करवाती हूँ बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू इंडक्टिव. तो आपको जो कोवैलेंट बॉन्ड बॉन्डिंग में सीखा था, सो व्हाट इज योर कोवैलेंट बॉन्ड? अ बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है. और कोवैलेंट बॉन्ड को आपको दो टाइप में क्लासिफाई करवाया था, द नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड अ पोलर कोवैलेंट. So how do we understand which bond is non-polar, which bond is polar? As per what is taught to you in bonding, we say कि अगर दो atoms, I take example of chlorine. So I'm having a chlorine molecule where there is a covalent bond between two chlorine atoms. Now, between these two chlorine molecules, there is no difference in electronegativity. इन दोनों में electronegativity में कोई भी फर्क नहीं है. So the bond that is formed between two atoms which are not differing in electronegativity is called non-polar. The whole meaning is ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर दो क्लोरीन एटम के बीच में शेयर हो रही है, इसको ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अपने तरफ खींच रहा है, ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से उसको अपने तरफ खींच रहा है. बट क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, this is equally shared. This is not going to move either towards this chlorine or towards other. तो non-polar covalent bond वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर is equally shared. And a pure non-polar covalent bond is that which is between atoms of the same element. Okay, उसी को हम कहते हैं pure non-polar covalent. पोलर कोवैलेंट किसको कहेंगे? इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ HCl, तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर. फर्क क्या है? क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन हैज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. So because chlorine has more electronegativity, the electron pair, which is the shared electron pair, is pulled more towards chlorine. ये बीचों बीच नहीं रहेगा, अभी इक्वली शेड नहीं रहेगा. तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होती है इज अनइक्वली शेयर्ड.
And because the electron pair is unequally shared, it is more towards one particular atom, which is की तरफ है, that will develop a partial negative charge, and another atom is going to develop a partial positive charge. So there are dipoles developed in a covalent bond, and these kind of covalent bond is called as polar covalent bond. तो इतना कंसेप्ट हमने केमिकल बॉन्डिंग से कोवैलेंट बॉन्ड के लिए समझ लिया. ये बैकग्राउंड जरूरी है, ओके, टू अंडरस्टैंड, ओके, द इंडक्टिव. अभी ध्यान दो, एक मॉलिक्यूल मैंने बोर्ड पे लिख दिया. दिस मॉलिक्यूल दैट वी हैव रिटन ऑन द बोर्ड, ओके, वी सी अ बॉन्ड बिटवीन carbon-carbon bond, carbon-carbon bond, and carbon-fluorine bond. From the knowledge that we have, we can very surely write कि जो इलेक्ट्रॉन CCl bond के है, they are more towards chlorine, है ना? क्योंकि chlorine is more electronegative than carbon, and this will develop a del minus charge on chlorine and del plus charge on carbon. And this is bond polarity. ये polar bond है. As per the bonding knowledge, these two bonds are between carbon and carbon. And here, okay, the bond should be non-polar, but in reality it is not. In reality, due to this one chlorine attached, not only the electrons of this bond are pulled towards chlorine, but electrons of this and this bond also gets pulled towards chlorine. ये pull में there is a more pull in the first bond, and this pull will decrease in the second bond, and it will be still less for the third bond. And we consider कि तीसरे एटम के बाद जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो वैनिश होता है, डिमिनिश होता है, कम हो जाता है. तो आपको the third atom, this pull is experienced. इस पुल से क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज डेल प्लस चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ रहा है, बट ये जो पुल है इससे इस कार्बन पे भी डेल डेल प्लस आ रहा है. डेल डेल प्लस है डेल प्लस से और छोटा प्लस, और इस कार्बन पे डेल 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 प्लस आ रहा है. इसमें ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज किसकी ज्यादा है, del plus is more than del del plus is more than del 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 plus. ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव चार्ज की वो पहले कार्बन पे ही ज्यादा है. ओके, ये जो इफेक्ट है ये पहले कार्बन पे ही ज्यादा है, सेकेंड पे और कम, थर्ड पे और. अब ये जो हो रहा है इसी को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. This is beyond bond polarity. This bond is supposed to be non-polar, but in this compound, a carbon-carbon bond has developed a permanent polarity, and this permanent polarity is due to a presence of this chlorine group. अगर यहाँ पे ये क्लोरीन नहीं होता तो ये जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे ये नहीं होता. So whatever we are seeing, okay, is due to a group or a atom attached. इसको attach करने के वजह से not only the electrons of this bond but the complete molecule has got a polarity developed, and this is what is called as inductive effect. Inductive effect is polarization of a covalent bond under the influence of adjacent polar atom or a group. तो किसी एटम और ग्रुप के वजह से परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ अ नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो ओरिजिनली नॉन पोलर है. सो व्हाट यू सी हियर इज परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ व्हिच बॉन्ड, अ नॉन पोलर कोवैलेंट, and that is what is called as inductive effect. So I'm writing the definition of inductive effect on the board. So this is a permanent effect. ये permanent polarization है of non-polar
covalent bond due to presence of polar atom or group. तो किसी एक पोलर एटम और ग्रुप के प्रेजेंस के वजह से पूरा मॉलिक्यूल परमानेंटली पोलराइज होना, इसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. अदरवाइज कार्बन कार्बन बॉन्ड शुड बी नॉन पोलर, but because there is chlorine attached, this chlorine has not only made electrons of this bond pull towards it, but also this, and also this. And this is what is called inductive effect. This effect, okay, is observed, okay, in sigma bond. तो अगर मुझे कुछ important characteristics आपको inductive effect के बताने हैं, तो सबसे पहले ये जो effect है, ये effect sigma bond का effect है. Okay, we are understanding how the electrons are displaced in sigma bond. Sigma bond के electrons कैसे displace होते हैं, ये हम, yeah. So see, what we were discussing is inductive effect को मैंने define कर लिया, right? It is a permanent polarization of a non-polar covalent bond due to presence of a polar covalent. अभी इसको और अच्छे तरह से हम समझेंगे. तो ये पूरा इफेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बॉन्ड जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में है, ओके, जिसमें क्लोरीन जो मैंने लिखा है इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. क्लोरीन के जगह पे मैं इन जनरल कोई एक्स लिखूं. सो व्हाट इज द होल रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द होल स्टोरी? एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और क्योंकि एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके, दिस होल थिंग इज हैपनिंग. अगर एक्स के जगह पे मैं कोई दूसरा एटम लगा दूं, तो सी दिस केस, इंस्टेड ऑफ एक्स आई एम पुटिंग एम. अभी ये बॉन्ड भी पोलर है, बट ये अलग तरह से पोलर है. इसमें जो कार्बन है that is more electronegative than M. Carbon is more electronegative than M. तो ये पोलर जरूर है, बट अभी इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का फ्लो कैसे रहेगा? The electrons are now pulled towards carbon, है ना? तो इसके वजह से M पे डेल प्लस आएगा और कार्बन पे डेल माइनस आएगा. And then, okay, due to the presence of this polar bond, the electrons of this and this bond are also affected, and this will be realized up to the third part. इसमें भी इस effect के वजह से, okay, this will have del del minus and this will have del 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 minus. इसमें obviously किसकी negative charge की magnitude ज्यादा होगी? The pull is more in first bond, still less in second, and very very less in third. So your del plus is more in magnitude than del minus, and then del 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 minus. So here also the effect is more pronounced in first bond, then second, and then third, and it diminishes after that. But what is more important is due to the presence of this polar bond, the other bonds which were supposed to be non-polar, they develop polarization. Okay, this is what is permanent polarization. Permanent क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो electronic displacement है, these arrows are showing you electronic displacement. ये electronic displacement किसी reaction के बाद नहीं. ये electronic displacement all the time is compound में exist करती है. Okay, क्योंकि ये electronic displacement is due to a particular structural feature which this compound is having, and because this structural feature is there in the compound, the electrons of this compound are permanently displaced. हम इसकी reaction करें या नहीं करें, ये electron permanently displaced ही रहेंगे
because ये पूरा electronic displacement is due to a presence of one polar bond. Is that clear? कभी ये इफेक्ट नहीं रियलाइज होता है या कभी हम इसको इंडक्टिव नहीं कहते, ये भी बता। अगर instead of X or M, where there is a big difference in electronegativity between carbon and other element, suppose I am having this kind of a free जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो CH बॉन्ड में थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा फर्क आता है, but as this is very low, okay, this is considered as a base or a standard and we call this as no inductive. So anywhere there is more pull than CH bond, that is what is inductive. CH may less difference in electronegativity and this is called as no inductive. यहाँ पे कोई inductive effect नहीं. This is no inductive. As no difference in इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो फर्क है वो बहुत ही कम है। तो जो CH बॉन्ड होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स हम कार्बन की तरफ डिस्प्लेस नहीं करते, इसको जीरो, इसको स्टैंडर्ड मान के, ओके, बाकी सारे ग्रुप्स को हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ये ऑर्डर क्या है? ऑब्वियसली एज वी गो अहेड आई विल टीच यू। ओके, तो अप टू नाउ आई जस्ट मेड यू अंडरस्टूड कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। अभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने डिस्कस तो कर लिए हैं बट मैं फिर से समझा। तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दिस ऑपरेट्स इन सिग्मा बॉन्ड। ये हम जो इफेक्ट समझ गए, ये इफेक्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का इफेक्ट है। इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? ये परमानेंट है। दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट। सो मीनिंग ऑफ परमानेंट इज दिस इज देयर ऑलवेज इन अ मॉलिक्यूल। दिस इज नॉट हैपनिंग ड्यूरिंग एनी रिएक्शन, ऑलवेज मॉलिक्यूल में ये इफेक्ट रहेगा क्योंकि दिस इज ड्यू टू अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल फीचर। Okay, inductive effect is greater for adjacent bond and decreases rapidly as interacting groups increases. मतलब जो पहला बॉन्ड है उसमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। as we go away, inductive effect will go on diminishing. So inductive effect is greatest in the adjacent bond. And it will go on decreasing as the distance between interactive group increases. इसका मतलब है अगर मैं इस कार्बन को नंबर करूं, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, तो कौन से कार्बन पे डेल प्लस चार्ज सबसे ज्यादा होगा? C1 पे सबसे ज्यादा होगा, फिर C2 पे होगा और फिर C3 पे होगा। And same case here, the first bond, okay, inductive effect
experience is maximum, then the second, then the third. Is what I've already written here and here. Another, ये जो पोलराइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ये एक ही डायरेक्शन में होता है एंड इट इज रिले. इसमें इफेक्ट रिले हो रहा है इस बॉन्ड के वजह से, इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में. इट इज जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन बॉन्ड बट इट इज गेटिंग रिले. और रिले होके वो कहाँ तक एक्सपीरियंस होता है, वो धीरे धीरे वैनिश हो जाता है. बट we consider that this operates up to third carbon. तो ये जो polarization है of electrons is in one direction only, single direction only, and this is polarization is in single direction. It is delayed. And vanishes या diminishes after third carbon. It vanishes or diminishes after third carbon. तो यहाँ तक आप समझ. अभी ये जो मैंने दो अलग केसेस आपको बताए, एक केस में एक एटम ऐसा लगा है जो कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसके वजह से कार्बन फ्रेमवर्क से इलेक्ट्रॉन उसके तरफ खींच जाते हैं और कार्बन को पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है. और दूसरा एक ऐसा एटम जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, which is electron releasing and that gains negative charge on that. तो ये बेसिस पे अभी हम इंडक्टिव इफेक्ट को दो कैटेगरी में क्लासिफाई. ये वाला जो ग्रुप मैंने एम यहाँ पे लगाया है, हम इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या ईडीजी के. So ईडीजी का फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो अगर कार्बन फ्रेमवर्क को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो व्हाट चार्ज कार्बन फ्रेमवर्क गेट्स? नेगेटिव. और इसको मैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहूंगी, ईडब्ल्यूजी कहूंगी. तो अगर कार्बन फ्रेमवर्क को ईडब्ल्यूजी अटैच है तो द चार्ज दैट कम्स ऑन कार्बन इज पॉजिटिव. तो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट जो है इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन दिस. व्हाट इज द ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन? अगर ईडीजी अटैच है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच है तो इस इफेक्ट को प्लस आई इफेक्ट कहते हैं. ईडीजी के वजह से जो इफेक्ट आता है वो है प्लस आई इफेक्ट. सो आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस. और अगर ईडब्ल्यूजी के वजह से जो इफेक्ट आपको कार्बन फ्रेमवर्क में मिलता है उसको हम कहते हैं माइनस आई. You can copy, then I will clear the board and I'll classify the inductive effect into two categories: positive inductive effect and negative inductive effect. Two types.
Okay, so I'm clearing the board and let us understand now two types, okay, of inductive effect, positive inductive and negative inductive. दोनों के समझते हैं। तो ये वाला पार्ट रख रही हूँ कि ये DG, WG मुझे आपको लिखना है। So we are classifying inductive effect into two types. Plus effect and minus. So let us understand first what is positive inductive effect. Positive inductive effect को प्लस आई इफेक्ट, तो कभी हमको पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मिलता है। Okay, the groups which are donating electrons to carbon chain through inductive, which are of this type. ये ग्रुप ऐसा है जो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन फ्रेमवर्क को डोनेट करता है। इसको मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं या इसी को कहते हैं प्लस आई ग्रुप, ये प्लस आई ग्रुप। तो अगर कार्बन फ्रेमवर्क को ऐसे टाइप का ग्रुप अटैच है जो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन फ्रेमवर्क को दे दे, तो इस ग्रुप को कहते हैं प्लस आई ग्रुप। और इसके वजह से जो इंडक्टिव इफेक्ट डेवलप हो रहा है, मतलब कार्बन फ्रेमवर्क पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इसी को कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट के लिए प्लस आई ग्रुप चाहिए, और प्लस आई ग्रुप कौन सा होता है? प्लस आई ग्रुप होता है इट-जee। Okay, so the group which donates electron to carbon through inductive is plus I. अभी let us understand कि कौन से ग्रुप प्लस आई ग्रुप में आएंगे, कौन से टाइप के एटम या ग्रुप को हम प्लस आई ग्रुप कहेंगे। ओके, तो आपके प्लस आई ग्रुप इट-जee होने चाहिए। तो वो कुछ मेटल्स हो सकते हैं या निगेटिवली चार्ज एटम्स हो सकते हैं या वो अल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं। सो योर प्लस आई ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो प्लस आई ग्रुप्स है, आपको उनके बारे में क्या याद रखना है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे कार्बन को, इनको हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कहते हैं। और in short iit-jee, which are they? So they are either metals, okay, यहाँ पे मैग्नीशियम है तो वो प्लस आई ग्रुप हो गया, either metals और नेगेटिवली चार्ज एटम्स। और प्लस आई ग्रुप से अभी मैं प्लस आई ग्रुप की एक ऑर्डर आपको बता। ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर मीन्स सी ऑल ग्रुप्स दैट आई एम अटैचिंग हियर won't have equal ability to donate electron. So some groups will have more ability
to donate electron and some groups will have less ability. तो ये order मैं आपको बता दूँ. So I'm giving you a plus I order. Plus I order में negatively charged group में सबसे ऊपर आएगा CH2 then आएगा NH and then आएगा O तो ये तीनों जो ऑर्डर में सबसे ऊपर है ये निगेटिवली चार्ज ग्रुप से then आता है कार्बोक्सिलेट and then अल्काइल ग्रुप्स. अल्काइल ग्रुप्स के बाद में I am writing tritium and I am writing deuterium and what will come after this H? H CH bond को हमने 0 as a reference पकड़ के ये order लिखी है. So anything that is more donating than CH is CD, then Cp, then C alkyl, then carboxy, then O minus, then LH minus, and then CH2 minus. So this is my plus I order. Alkyl groups में what is the observation? आपका जो alkyl group है उसमें जितने कार्बन ज्यादा होंगे उतना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है. मोर इज द कार्बन, ओके, मोर इज इट्स प्लस आई पावर इंक्रीजिंग. उसकी प्लस आई पावर बढ़ते जाती है. ये सब डोनेटिंग है. मैं एरो डालती हूँ. ऑल दीज आर डोनेटिंग ग्रुप. दे विल गिव इलेक्ट्रॉन. और अल्काइल ग्रुप में अगर कार्बन ज्यादा है मोर इज द कार्बन, मोर इज द प्लस आई पावर इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फॉर अल्काइल. ये टर्शियरी ब्यूटाइल लिया है जिसकी प्लस आई पावर ज्यादा है. से आइसोप्रोपाइल से एंड आइसोप्रोपाइल विल हैव अ मोर प्लस आई पावर टू इथाइल. I will have a more plus I power. तो अल्काइल ग्रुप में कार्बन बढ़ा तो प्लस आई पावर बढ़ते जाती है. विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस आई पावर इंक्रीजेस. कार्बन इंक्रीजेस, there is an increase in plus I power. This is what you have to follow for alkyl groups. तो ये कुछ ग्रुप्स मैंने आपको बता दिए जो क्या है प्लस आई ग्रुप्स है. अगर इसमें से कोई भी ग्रुप आपको कार्बन फ्रेमवर्क को अटैच देगा तो वो ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन फ्रेमवर्क को देगा और फिर कार्बन फ्रेमवर्क पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इसी को कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. ओके, व्हिच इज to a plus I group. A plus I group is iit-jee, but what carbon gets is a negative charge. तो अगर plus I group लगा है तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आता है? बट इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? प्लस आई इफेक्ट या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. इज दैट क्लियर? तो इतना लिख लो. आई क्लियर दिस साइड ऑफ द ग्रुप. तो नेक्स्ट होगा नेगेटिव इंडक्टिव और वो इस टाइप के ग्रुप से होगा. माइनस आई ग्रुप से होगा. और आपका जो माइनस आई ग्रुप होता है वो ईडब्ल्यू और जिसके वजह से कार्बन फ्रेमवर्क पे पॉजिटिव चार्ज आता है.
Start clearing this side of the board. So this is due to electron withdrawing group. So the group that withdraws electron from carbon through inductive effect is called minus I group. And the effect is called minus I effect. अभी ये ग्रुप कौन से होंगे, कौन से ग्रुप माइनस आई ग्रुप होंगे? They themselves will be negatively charged. तो आपके माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं. और इनको हम कहते हैं EWG. The minus I groups are electron withdrawing groups or they are called as EWG. जिसमें basically positively charged atoms हमको present दिखते हैं. या atom which is attached to more electronegative group by some multiple bond. This can. अभी मैं दे देती हूँ आपको माइनस आर की ऑर्डर. तो माइनस आई ऑर्डर में पुलिंग एबिलिटी में सबसे ऊपर नाइट्रोजन विद प्लस चार्ज. So why nitrogen with plus charge? Okay, is post withdrawing because nitrogen has a very small size. Everybody knows इसकी size बहुत छोटी है और इतने छोटे साइज के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जब भी प्लस चार्ज आ जाता है, so it would like to get rid of its plus charge as early as possible, and that's the reason it is more electron withdrawing. So all the nitrogens with the plus charge are electron withdrawing. ये ऑर्डर ऐसा क्यों है, ये हम थोड़ा आगे चले जाएंगे GOC में, तो आपको खुद ही समझ में आएगा. Various things we will keep discussing and which will make you understand why the order is this way. Why NRP is more withdrawing than say NR2H or NRH2 and so on. All this we will keep discussing as we go. कि अभी बस एक ऑर्डर दे रही हूँ, वो आप समझ लो.
एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा एटम जो मल्टीपल बॉन्ड से डबल या ट्रिपल बॉन्ड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को अटैच। This pulling, the groups are withdrawing. ये हाइड्रोजन्स जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो भी EWG है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग। The phenyl ring, benzene ring होती है C6H5, that is also withdrawing. And last is your double. ये कुछ ग्रुप्स की मैंने -R की ऑर्डर आपको दी। इसमें से कोई भी ग्रुप अगर कार्बन फ्रेमवर्क को अटैच है तो आपको -R इफेक्ट मिलेगा। ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा और कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो अभी मैंने आपको व्हाट इज बेसिक इंडक्टिव इफेक्ट ये समझा। अभी इसको कहाँ पे यूज करते हैं, क्या समझ में आता है, ये वाला पार्ट थोड़ा बहुत हम समझ। So after this I am explaining you applications of inductive effect. Let us understand application of inductive effect. जो पूरा बोर्ड क्लियर करना पड़ेगा तो आप लिख लो, then I clear the board and we start understanding some application, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ये inductive effect का मतलब क्या है।
clear the code and we start understanding applications of inductive effect. So let us understand now applications of inductive effect. पहला application जो है is about stability of carbocation. First application जो मैं discuss कर रही हूँ is understanding stability of carbocation. तो ये stability समझाने के लिए मुझे पहले थोड़ा बहुत आपको कार्बोकटायन के बारे में समझाना पड़ेगा. So what is a carbocation? A carbon with a cluster. जैसे ही कार्बन पे क्लस्टर आ जाता है, okay, means it is having a electron less. Around this you see 6 electrons और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और इसके पास ये एक empty p ऑर्बिटल है. This is empty p. जब भी हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो उसके जो ट्राइगोनल प्लेनार वाले p ऑर्बिटल्स है वो ये. One is this, another is this, and third one is this. This is the trigonal planar part. Okay, ये जो unhybridized p रहेगी is perpendicular to this. Okay, one lobe coming towards us, another lobe going. So this is what is the carbocation. Okay, जिसका hybridization sp2 होता है. आप ज्योमेट्री ले सकते हो ट्राइगोनल प्लेनार. And you will see 6 electrons around it. And yes, important, it has one empty p. उसके पास one empty p होता है. ये जो मैंने दिखाया. कैसे बनता है? जब भी कार्बन का एक बॉन्ड heterolytic fission से break. So I'll discuss later what is heterolytic fission, but when a bond breaks in a particular manner and a atom or a group of atom takes सभी electron from carbon, तो अपने electron ले जाता है और carbon को क्या बना देता है? Positive. Then you get the formation of carbon. अभी हमको डिस्कस करना है stability of carbon. तो stability जब भी डिस्कस होगा किसी भी आयन के स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है तो जो हम बेसिक फॉलो करते हैं वो स्टेबिलिटी ऑफ आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी ऑन. स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी. जितना चार्ज ज्यादा है उतनी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी. तो हम एक पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं. तो एनीथिंग दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज will decrease the stability. Any factor that will decrease the magnitude of
positive charge is going to increase the stability. Okay, so stability of a charge species is increases by dispersal of a charge. वो जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उतनी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है. ये ओके. अब इसको और समझते हैं कैसे किसी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज का चार्ज बढ़ सकता है. व्हाट इज द होल मीनिंग ऑफ चार्ज इंक्रीजिंग, चार्ज इंक्रीजिंग. तो मैं अभी एक एग्जांपल लेती हूँ. So I'm taking a carbon which has a positive charge, a carbon attached to two hydrogens. और ये जो तीसरा एटम है यहाँ पे, ये कोई ग्रुप. तो अभी मैंने इंडक्टिव में आपको दो तरह के ग्रुप बताए थे, प्लस आई ग्रुप बताया था और माइनस आई बताया. तो आई टेक दिस ग्रुप एज प्लस. मैंने ये इit-jee. तो अभी आप देख रहे हो कि जो कार्बोकटायन है उसको एक प्लस आई ग्रुप या इit-jee अटैच है. तो क्या होगा, जैसे ही ये इट-jee की प्लस आई पावर बढ़ेगी, मैं कंपेयर कर रही हूँ दो चार ऐसे कार्बोकटायंस को, क्योंकि स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली होगी ना, एक की स्टेबिलिटी कोई नंबर कैलकुलेशन नहीं है. तो दो कार्बोकटायन दिए हैं और हम कंपेयर करें, दोनों में इट-jee ही लगा है. एक का इट-jee पावर ज्यादा है, दूसरे का इट-jee पावर कम है. तो इट-jee से क्या हो रहा है, इट-jee से ये हो रहा है कि ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इन पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. तो जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, व्हाट हैपेंस टू देयर magnitude of positive charge? The charge density or magnitude of positive charge is now going to decrease. और जैसे ही ये magnitude of positive charge या चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी, का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, ओके, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं दो कार्बोकटायन, एक में ग्रुप का इट-jee पावर ज्यादा है, दूसरे में कम. तो जिसमें इट-jee पावर ज्यादा है उसमें प्लस चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा कम होगी और वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल. So putting this in a simple words, so I am increasing the magnitude of इट-jee. जैसे ही इट-jee की मैग्नीट्यूड बढ़ती जाती है, मोर डोमिनेटिंग, प्लस आई की मैग्नीट्यूड कम होती है, राइट, दैट डिक्रीजेस द चार्ज डेंसिटी. पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो गई, और जैसे ही चार्ज डेंसिटी कम हो गई, दैट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, कौन सा कार्बोकटायन स्टेबल होगा, जो इट-jee को अटैच है. और जैसे ही इट-jee की एबिलिटी बढ़ते जाती है, कि वैसे ही कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बढ़ते जाए. मोर एंड मोर प्लस आई ऑर्डर वाले ग्रुप अगर आपने लगा दिए, उतना ज्यादा वो कार्बोकटायन क्या होते जाएगा, स्टेबल होते जाएगा. सो डिड यू अंडरस्टूड टिल हियर? अभी देखो, मैं ग्रुप चेंज कर देती हूँ. अभी इंस्टेड ऑफ इट-jee, अगर ये ग्रुप इट-jee है, तभी क्या. So I take once again a carbokation and I am attaching to this carbokation a group. But now this group is withdrawing.
ये EW है। तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर लेता है, कार्बन से अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। जैसे ही कार्बन से इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप के तरफ आ गए तो जो पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी as somebody is withdrawing the electron। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं प्लस चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ते जाते हैं, मतलब EWG की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी तो प्लस चार्ज की भी मैग्नीट्यूड बढ़ेगी, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी। और अगर चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होना है, स्टेबिलिटी ऑफ आयन क्या होना है, डिक्रीज। तो यहाँ पे एग्जैक्टली रिवर्स होगा। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ EWG इंक्रीजेस, हमने EWG की पावर को बढ़ा दिया, मोर विड्रॉ करेगा and that will increase the positive charge, that will increase the charge density। और जैसे ही चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो गई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या हो गई, डिक्रीज। तो हम इन जनरल कह सकते हैं कि अगर हमारे पास EDG है तो EDG increases stability of carbocation and if to the carbon framework EWG is attached then EWG decreases stability of carbocation। ओके, तो मैंने बेसिक समझा दिया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के लिए, हाउ इट इज कनेक्टेड टू इंडक्टर। अभी मैं कुछ कार्बोकैटायन दे रही हूँ बोर्ड पे।
So I'm clearing this side of the board. अगर हो गया है तो So I'm putting some more examples here. You can solve इनमें आपको stability order बतानी है, which is more stable, which is less stable. So try solving this and also put those inductive के arrows.
जो छोटे एरोस हम लगाते हैं ये वाले, दिस एरो, आई वांट यू टू लर्न गिविंग these arrows are nothing but showing you direction of electron. को ही समझना है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट समझना। तो जो भी इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स में ग्रुप दिए हैं उनके वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रही है वही हमको समझनी है। So here, let us understand. So R is alkyl group. अब ये alkyl group कौन से टाइप का ग्रुप है? प्लस I ग्रुप, राइट? तो मतलब it is electron donating group. इट-जee है. This group is releasing the electrons on this carbon and there are 3 alkyl groups. यहाँ पे 2 alkyl group है, यहाँ पे एक ही alkyl group है और CH को हम नीदर प्लस नॉर माइनस मानते हैं। तो ये 3 में कहाँ पे प्लस पावर ज्यादा है, कहाँ पे इट-जee ज्यादा है? फर्स्ट केस में where the इट-जee is there, more इट-जee, more stability. तो इस केस में जो ऑर्डर होगा वो ये, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। नेक्स्ट केस में ये मिथाइल ग्रुप है अल्काइल और ये जो है इसको साइक्लो अल्काइल ग्रुप है। तो ये आपकी इंडक्टिव इफेक्ट की ऑर्डर हो गई। ओके, तो ये भी आपका जो कार्बोकैटायन है इसको हम टर्शियरी कहते हैं, ये भी टर्शियरी है, अटैच टू 3 कार्बन। ये है सेकेंडरी, ये है प्राइमरी और वो है मिथाइल। So a tertiary carbocation always is more stable than secondary and primary. क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन पे मोर प्लस आई हो जाता है। तो ये वाला सिचुएशन भी वही है कि दिस कार्बन इज अटैच्ड अल्टीमेटली टू 3। यहाँ पे देखोगे तो प्लस आई ऐसे और यहाँ पे देखोगे तो प्लस आई बस एक पूरे साइक्लोअल्काइल का। Where the plus I is more, कहाँ पे प्लस आई की मैग्नीट्यूड ज्यादा है? फर्स्ट केस में ये टर्शियरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। And that's the reason this is more stable than this and we go. The next case is T stands for tritium, T stands for deuterium and H is your hydrogen. तो T और T हमने कहाँ पे देखे थे? प्लस आई ऑर्डर में, है ना? और उसमें भी किसकी प्लस आई पावर ज्यादा है?
is that of tritium. तो tritium में CP bond is direction this plus I. CB bond में P plus I है and here no impact है. But where the magnitude of plus I is more, यहाँ पे plus I मैक्सिमम है, ज्यादा है. और क्योंकि प्लस आई ज्यादा है, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा है. So the order that we get is this. In the next case, ये सारे सेकेंडरी ही, पर फर्क क्या है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, इसको मैं प्लस आई, बट यहाँ पे रिंग में एक ऑक्सीजन आ गया और उस ऑक्सीजन के वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस बॉन्ड आर टुवर्ड्स ऑक्सीजन, second bond are towards oxygen, and third bond very diminished, but there is a little minus I, and that minus I effect is more because this is right present at second bond. तो यहाँ पे प्लस है बट इधर माइनस है और इधर भी माइनस है. प्लस से स्टेबिलिटी बढ़ती है, माइनस से स्टेबिलिटी कम होती है, और जहाँ पे माइनस आई बहुत ज्यादा है वहां पे बहुत कम. तो जो स्टेबिलिटी की ऑर्डर है वो ये. दिस इज व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर दैट. नेक्स्ट केस में देयर इज अ मिथाइल ग्रुप व्हिच इज अल्काइल, इसका आ गया प्लस आई, बट क्लोरोमिथाइल है तो ये हो गया माइनस, और ये डाइक्लोरोमिथाइल है सो माइनस आई. तो यहाँ पे माइनस आई ज्यादा है और इसके लिए स्टेबिलिटी इसकी बहुत कम है, इसकी आएगी, और यहाँ पे प्लस आई है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है. So like this in individual molecule, we compare the groups की प्लस आई है माइनस आई है. प्लस आई की पावर जितनी ज्यादा उतनी कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, और माइनस आई की पावर जितनी ज्यादा उतनी कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी कम होते जाए. more plus I, more stable. More minus I, less stable. Case. Nitro is minus I. Cyanide is also minus I. Fluorine is also minus I. And hydroxy is also minus I. सारे minus I ग्रुप है, और minus I ग्रुप से कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाती है. Minus I decreases the stability of कार्बोकटायन. अभी कहाँ पे माइनस आई ज्यादा है? I've given you the order. Check the order. Nitro, cyanide, fluoro, and hydroxy, which has more minus I, सबसे maximum. And then this will come. Then this will come. And this is with minimum minus I. यहाँ पे कम. तो जहाँ पे माइनस आई कम है वो कंपैरेटिवली क्या होगा, स्टेबल. क्योंकि माइनस आई बढ़ने से स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो माइनस आई कम होने से स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी. सो कंपैरेटिवली where we see less minus I, there the stability is. अगला केस फ्लोरीन लगाया. फ्लोरीन में सब केसेस में जो इफेक्ट है वो
that you see is minus I. But position of fluorine में फर्क, ये कार्बोकटायन के फर्स्ट एडजेसेंट कार्बन पे है A, और एक बॉन्ड अवे हो गया और एक फर्दर अवे हो गया। तो जितना डिस्टेंस बढ़ते जाएगा उतना इंडक्टिव इफेक्ट वैनिश या डिमिनिश होते जाएगा। तो माइनस आई सबसे कम कहाँ पे है, जहाँ पे डिस्टेंस है, और माइनस आई सबसे ज्यादा कहाँ पे है, जहाँ पे डिस्टेंस। एंड बिकॉज हियर माइनस आई इज कि माइनस आई से स्टेबिलिटी तो कम ही होती है, बट कंपैरेटिवली दिस विल बी मोर स्टेबल, okay, then this and then this. So is everybody clear with carbocation stability, which we discussed as one of the applications of inductive effect? इसको हमने as a inductive effect का application समझा। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो मैं डिस्कस कर रही हूँ कि वो हम एसिडिटी देखेंगे, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। So can I clear the board? हम ये सारे कार्बोकटायन के एग्जांपल्स को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? ये कार्बन इस पे प्लस चार्ज है। I know कि hybridization of this carbon is sp2 and all these are carbons. Their hybridization is sp3. So electronegativity किसकी ज्यादा होती है? What is more electronegative? sp2 carbon is more electron. तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ क्यों है? क्योंकि this carbon is more electronegative than this and it is pulling the electrons towards itself. ओके, तो ये प्लस आई की ऑर्डर हम हाइब्रिडाइजेशन से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी समझ सकते हैं। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। इज दैट क्लियर टू यू? जैसे यहाँ पे ये sp2 ही है बट ये sp है and that's the reason the electrons are going in this direction. Okay, and in other cases nitrogen, fluorine and oxygen are more electronegative. तो हर जगह पे जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मैंने दिखाई है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑर्डर ही फॉलो करती है। So either you take it from electronegativity or learn your plus I groups and minus I. जो माइनस आई ग्रुप्स है वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, जो प्लस आई ग्रुप्स है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा बहुत एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस करती हूँ एज एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट।
second application, understanding acidic character. Acidic character समझाने के लिए I just in general take acid AH. So what is the meaning of acidic character? I'm just changing the marker. What is the meaning of acidic character? Acidic character means if this compound is acid, then when we are dissolving it in water, it will release H plus. तो अगर ये एसिड है तो A माइनस इस एसिड का कंजुगेट बेस है. ओके, ये एसिडिटी हम अच्छे से आयोनिक इक्विलिब्रियम में समझते हैं, है ना. एसिडिटी को बहुत अच्छे से फिजिकल केमिस्ट्री में आयोनिक इक्विलिब्रियम में समझा है. अगर मुझे किसी भी एसिड की एसिडिटी समझनी है तो एसिडिटी ऑफ एनी एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O+, जिसमें ये इक्विलिब्रियम राइट पे है, जिसमें H3O+ का कंसंट्रेशन ज्यादा है वो मोर एसिडिक है. या हम Ka कैलकुलेट कर सकते हैं और जिसका Ka ज्यादा है वो मोर एसिडिक है ना. तो Ka क्या होता है? Ka होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, जो है concentration of A minus upon concentration of H3O plus upon concentration of A. So all this is taught to you in ionic equilibrium. You know what is Ka. तो अगर फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम आपको पूछा जाता है तो Ka के वैल्यूज देंगे या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस देंगे और उससे बहुत आसानी से या pH देंगे तो योर एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH हो जाता है या inversely proportional to pKa. So all this is taught to you in ionic and units. और अगर हमको कोई भी नंबर नहीं दिया इसमें से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सिर्फ मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे, तो मॉलिक्यूल्स को देख के हमको कैसे समझेगा? हाउ डू आई कंपेयर एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड? कैसे समझेगा बिना किसी नंबर? तो H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कभी ज्यादा होगा जब ये इक्विलिब्रियम राइट पे ज्यादा होगा, और उसका मतलब ये है कि ये जो A माइनस है H3O प्लस का ज्यादा है तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तभी होगा जब ये स्टेबल. तो ये जो हमारा एसिड का कंजुगेट बेस है, जितना ये कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल, ओके, इसको एसिड का हम कहते हैं कंजुगेट बेस. सो मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, मोर एसिडिक इज द एसिड. क्योंकि जितना ये ज्यादा स्टेबल होगा उतना ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और उतना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस बढ़ेगा, K बढ़ेगा, pH कम होगा, pK कम. तो हम ऑर्गेनिक में कहेंगे कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट. मुझे कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी है. एनी फैक्टर दैट इज इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस will increase the acidity. Any factor that is increasing the stability of conjugate base will decrease the acidity. तो अभी हम क्या करेंगे? हम aliphatic carboxylic acid, इसमें aliphatic carboxylic acid is RCOOH. ये carboxylic acid है. And when I dissolve this in water, it will donate H plus.
giving me its conjugate base, which is a carboxylate ion, and will make water acid. So I get here formation of carboxylate ion. Okay, so any factor that will increase the stability of carboxylate ion is going to make the acid more acidic. यही बेस है. ओके, इसी बेसिस पे अभी हम आगे तो कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा, जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल. The acidity is directly proportional to stability of carboxylate. यहाँ पे जो कंजुगेट बेस है वो कार्बोक्सिलेट आयन है. जितनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उतनी एसिडिटी ज्यादा. अभी बस समझ लेते हैं ग्रुप लगा के, दो टाइप के ग्रुप लगा के समझ लेते हैं. Starting in two cases, I'm attaching a group carboxylate ion, and this group is E, B, G. And I'm attaching a group to carboxylate ion, and this group is E-W-G. और इससे कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है ये हम समझें. तो अभी कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है. अगर मैं इट-जee लगाती हूँ तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और डोनेट करेगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी. तो यहाँ पे मोर is iit-jee, more is the magnitude of electron donating ability of a group. That will increase charge density. Negative charge की magnitude और negative, and the end result is decrease in stability. तो अगर stability decrease हो गया तो उसका मतलब है in acidity. और अगर E-W-G लगाया है और E-W-G का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, मोर विड्रॉइंग, तो उससे नेगेटिव चार्ज को वो अपने तरफ खींच रहा है, जिससे नेगेटिव चार्ज की चार्ज डेंसिटी कम हो गई और जिससे स्टेबिलिटी बढ़ गई और जिससे एसिडिटी भी बढ़ी. अगर इंडक्टिव से एसिडिटी देखनी है तो E-W-G लगा है, तो दैट इंक्रीजेस एसिडिटी. और E-P-G लगा है तो दैट will decrease the तो E-W-G से एसिडिटी बढ़ेगी और E-T-G से एसिडिटी कम हो जाएगी. And I just put some simple examples on the board. तो आप इतना कॉपी कर लो और फिर इन एग्जाम्पल्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो.
So I want to clear left hand side of the board. So I'm clearing this side of the board. Continue with some more examples. Right? So let's understand this. The pella acid is formic acid where there is a CH bond. CH bond is no inductor. इसका acid A plus है और EDG से acidity कम होगी और यहाँ पे प्रोपियन एक कार्बन बढ़ गया 4 प्लस I बढ़ गया तो acidity कम होगी इसलिए भी प्लस I है acidity कम होगी
What is most acidic in this? Formic, then acetic, and then protein. Is fluoroacetic. तो withdrawing group आ गया और जैसे ही -I इफेक्ट आ गया -I से एसिडिटी बढ़ जाती है यहाँ पे भी -I और यहाँ पे -I सबसे ज्यादा है जहाँ पे -I मैक्सिमम होगा वहाँ पे एसिडिटी बढ़ते जाएगी next. So again, N plus is a minus I group. Nitro is -I. Fluorine also is -I. कहाँ पे -I की पावर ज्यादा है कहाँ पे -I की पावर कम है where you see more -I, that is what is going to be more acid. More is the withdrawing group की पावर बढ़ते जाएगी एसिडिटी बढ़ते जाएगी donating group की पावर बढ़ते जाएगी एसिडिटी कम होते जाएगी so more is EWG, more is acid. More is iit-jee, less is acid. Next is this is formic and this is oxalic. So formic में we consider no plus no minus. But इसमें एक कार्बोक्सी पे दूसरे कार्बोक्सी का क्या लगेगा -I लगेगा और जिसके वजह से ये जो मैं कंपेयर कर रही हूँ ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है एक COH और ये है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तो हमेशा डाइकार्बोक्सिलिक पे always on one carboxylate ion there is a -I of another carboxy and that's the reason your dicarboxylic acids are more acidic than monocarboxylic. So this. Then here everywhere fluorine, so -I. But you can understand that the position of fluorine is changed. So here fluorine is very close. Here it is still away. And here it is further. यहाँ पे -I की पावर कम हो गई और यहाँ पे फ्लोरीन के -I की पावर ज्यादा है और जहाँ पे -I की पावर ज्यादा है वहाँ पे एसिडिटी ज्यादा है. So what I have discussed in inductive is I explain you basic inductive. I explain you two applications of inductive. In the next lecture, I'll discuss a couple of more applications of inductive and we will go ahead and understand with some more electronic displacements or we put some electronic displacements. Okay, so that's it for today. See you in the next lecture where we continue understanding electronic displacements more. Bye everyone.